Hello everyone, स्वागत करुचे सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about some questions from Indian Economy +3 for semesters. तो आम सब कोर्स कंप्लीट करें जो मैंने देखी ना जाकि देखीदे. तो आज आम क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा बेसिकली सर्ट टाइप क्वेश्चन जो रोचे आउ डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्वेश्चन रो लिंक दिज्व जो मैंने चाहिए डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें. So start the class. So first आम देखा fill up the blank questions. So first question, dash is called the year of great division. को वर्ष को बृहत विभाजन वर्ष कहुए. dash year is called the year of great division. So it is 1921. 1921 मसीहा को ग्रेट डिविजन ईयर कहुए कारण 1921 पर जनसंख्या गोटे वर्धमान हार रे बढ़ापी चलला. 1921 पूर्वर गोटे स्थिर हार रे वृद्धि पाउला किंतु 1921 पर गोटे हार वृद्धि जो हार जनसंख्या वृद्धि हार बढ़िबारे लागिला. तो से 1921 को ग्रेट डिविजन ईयर बोली कहुए. द रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू मेल पॉपुलेशन इज कॉल्ड. द रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू मेल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो. This is called sex ratio. That is the number of female per thousand of male. हजारे पुरुष संख्या रे महिला संख्या को आम लिंगानुपात कही. That is sex ratio. Mining is included in that sector. So basically there are three sectors: primary sector, secondary sector and service sector or tertiary sector. So mining is included in the primary sector. The primary sector है mining include होता है. Okay, so we'll write this is primary sector. The contribution of dash sector is the highest to national income. को sector अवदान बेसी रहुची national income को, that is nothing but service sector. Service sector अवदान सबुठारु बेसी रहुची. The fifth, the objective of 12 5-year plan was. Objective of 12 5-year plan. Faster, inclusive and sustainable growth. Okay, faster, inclusive and sustainable growth thila amar 12 5-year plan ro objective. The next question, number of death per 1000 population is called death rate. This is death rate. The sex ratio of India is the sex ratio of India 1943 थिला. According to 2011 census, it is 943. The literacy rate of dash state is the highest. को स्टेट रो लिटरेसी सबुठारु हाईएस्ट. It is Kerala. केरला रो सबुठारु साक्षरता हार अधिक रही. The population of dash age group is the largest. आमर 15 रु 59 वर्ष एई एज ग्रुप रे लोक आम देश रे बेसी रही चंती. Next question, MGNREGA provides dash days of employment to rural household. So it is 100 days. 100 days of employment to rural household. The full form of Mudra. Mudra is Micro Unit Development and Refinance Agency. Refinance Agency. So the full form of Mudra is Micro Unit Development and Refinance Agency. The full form of NITI, that is National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India. Then dash unemployment is created because Indian agriculture depends on monsoon. Monsoon उपरे निर्भर करुथिबारु क्यों बेकारी सृष्टि होता है. दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून. तो जो टाइम रे वर्षा हुए मानसून जो से लोक मैंने काम पाती अन्य समय काम पाई न था बेकारी होता. दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. द प्रोडक्टिविटी ऑफ डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज 0. दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रो प्रोडक्टिविटी हो 0. MDPI was developed by dash and used by India in poverty estimation. So MDPI was developed by UNDP, United Nations Development Program.
MDPI टा जोटा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इट वाज डेवलप्ड बाय UNDP. The objective of first 5-year plan was development of agriculture. फर्स्ट 5-year plan रे एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया होता तो से ऑब्जेक्टिव थिला डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2013. जातीय खाद्य सुरक्षा आईन 2013 रे इंट्रोड्यूस कराइथिला. द गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू 0 इंडिकेट्स गिनी कोएफिशिएंट रो वैल्यू जदि 0 हैला देन देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी और 1 जदि हेले परफेक्ट इनइक्वालिटी. तो गिनी कोएफिशिएंट रो वैल्यू जेते अधिक हबो माने 0 रु 1 आडकू जेते अधिक हबो सेते इनइक्वालिटी बढ़ी बढ़ी चलिबो. So these are the fill of the blanks question. Next we'll see the short type questions. So short type question. How was the condition of village in the pre-British period? British माने आसीबा पूर्वरु हमर गाँ मनकर स्थिति केमिति थिला. So before British or in the pre-British period the village was completely self-reliant village. संपूर्ण भाव रे आत्मनिर्भरशील विलेज थिला सेल्फ रिलायंट. ओके दैट वाज सेल्फ रिलायंट विलेज माने अन्य ऊपर निर्भर करू नथिला. एंड इट वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड वांट बहुत कम अभाव रे लोक माने चलुथिले और लोकंक ऊपर एते अधिक अलगा गाँ ऊपर एते निर्भर करू नथिले. तो तांका पाखरे सबु गोटे गाँ रे सबु जिंस सुविधा थिला जहाँ स्वराज विलेज आम कहीपर सेल्फ रिलायंट विलेज. देन व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन कौन व्यवसायीकरण कौन. सो आगुरी कौन होता विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य भी चाष करा होता किंतु जिते बेले ब्रिटिशर्स माने आसिले बेसिकली कमर्शियल क्रॉप्स जोटा अर्थकारी फसल आम कही था जमती आमर सुगार केन है मैंने कॉटन है कपा कि आमर जो बादाम जो ओके नट्स माने सेटा है तो ये सब को कमर्शियल क्रॉप कहसी होता है. तो जदि कमर्शियल क्रॉप जदि अधिक चाष हुए दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर केवल बिक्री जिते बेले आम चाष करुचे. तो जिते बेले ब्रिटिशर्स माने आसिले यही जिनस कमर्शियल क्रॉप माने बेसी चाष है खाद्य शस्यर परिमाण कमीगला that is called commercialization of agriculture. So farming or cultivation of commercial crop is called commercialization of agriculture. Then what is progressive ruralization? Ruralization माने होची ग्रामीकरण माने ग्राम आउ टिके करबा. प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन तार अर्थ गुटे टिके टाउन रो स्थिति थिला ताकू पुणी गाँ को कन्वर्ट करबा. तो जिते बेले सब इंडस्ट्रीज माने धीरे धीरे बंद होगा लगिला ब्रिटिशर्स माने जिते बेले आसिले जो आमर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो किछि किछि थिला गाँव मानकरे सेटा जिते बेले बंद होगा लगिला लोक माने सब एग्रीकल्चर उपरे निर्भर करबा पे बाध्य होइतिले. दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन. सो द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेर क्लोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द पीपल started to depend on agriculture. That is progressive ruralization. What does deindustrialization mean? Deindustrialization अर्थ कौन. इंडस्ट्रियलाइजेशन माने कौन शिल्पीकरण माने शिल्प अधिक स्थापन करवा. डीइंडस्ट्रियलाइजेशन होची इंडस्ट्री कमी कमी जीवा बंद हवा. That is deindustrialization. So in the time of Britishers our local industries were closed down because of different types of step taken by the Britishers मानक द्वारा विभिन्न प्रकार पदक्षेप नेवा फल रे कौन होता बहुत सारा इंडस्ट्रीज माने क्लोज हो गला से फैसिलिटी मिलना नहीं. ता सहित माने फॉरेन रु वैदेशिक द्रव्य मान सब आसिला. तो वैदेशिक द्रव्य मान सब आसवा फल हम देशीय जो इंडस्ट्रीज माने क्लोज है कारण जिते बेले विदेशी बजार रु जिनस मान आसला आम देशीय द्रव्य गुड़िक ता सहित प्रतियोगिता करि पारिला नाही.
तो बहुत लॉस रे गला लॉस रे जीवा फल रे इंडस्ट्री माने सब क्लोज हो गला दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट so permanent settlement it one type of revenue from the land in this system the revenue from the land is collected by the zamindars and paid to the britishers तो peasants मान ठारू माने जो मैंने चाष करते ठारू जमींदार्स माने कलेक्ट करती सेटा नहीं कि ब्रिटिश को दियंती दिस इज द परमानेंट सेटलमेंट एंड दिस वाज स्टार्टेड इन द बेंगल स्टार्ट होता बेंगल प्रोविंस रे धीरे धीरे सब आड़ को बिहार ओडिशा सब आड़े चलला तो परमानेंट सेटलमेंट रे द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड रेवेन्यू को पूरा फिक्स रखा होता रेवेन्यू जहाँ भी आगु धार हो दैट विल कंटिन्यू सो रेवेन्यू विल नॉट चेंज जहाँ भी टैक्स आदाय करा होता दैट इज फिक्स दैट वाज फिक्स से परमानेंट कहा होता देन नेक्स्ट इज व्हाट इज जमींदारी सिस्टम माने कौन सो जमींदारी सिस्टम भी परमानेंट सेटलमेंट सहित समान बट हियर रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड रेवेन्यू कुड बी इनक्रीज्ड रेवेन्यू को जिते बेले ब्रिटिश चाहूले ताको बढ़ाई दे पारुथिले जमींदार सिस्टम रे किंतु परमानेंट सेटलमेंट रे इट वाज फिक्स्ड so zamindari system is also one type of system that is introduced by the britishers to collect revenue from the peasants through zamindars what is riyodwari system होची माने जदि peasant माने डायरेक्ट जदि britishers मान को revenue जदि देले that is riyodwari system okay there will not be any middleman जदि रहिबनी so in riyodwari system the peasants directly paid their revenue to tax revenue to the britishers there is no middleman in riyodwari system then next is who were bania से समय रे बनिया माने किए बनिया माने होचंती सब गाँ मान करे देखा जाउतले बेसिकली जो माने लोन प्रोवाइड करुतले लोक मान को ओके बहुत कम परिमाण रे लोन प्रोवाइड करुतले इनफॉर्मल लोन so bania were the bank in the village who were providing loans to the people with high interest rate so माने बहुत अधिक सुध हार चार्ज करथिले आ लोक मान को ऋण प्रदान करथिले what is स्वदेशी मूवमेंट माने कौन स्वदेशी मूवमेंट होचे हम स्वदेशी जोटा हम देश रे जो जिंस तयारी होची ताकू प्रोत्साहन देवा पई बा एनकरेज करबा पई तार यूज को 1905 मसीह मूवमेंट होता दैट इज स्वदेशी मूवमेंट सो स्वदेशी मूवमेंट इज द मूवमेंट वेयर द डोमेस्टिक गुड्स वेयर एनकरेज टू बी कंज्यूम बाय द पीपल ओके डोमेस्टिक गुड टू बी यूज्ड बाय द पीपल लोक मैंने ताको व्यवहार करेंगे बोली जो मूवमेंट होता दैट इज स्वदेशी मूवमेंट हु वेयर मास्टर क्राफ्टमैन किए तो बेसिकली ब्रिटिशर्स मानक ठारे दुई जन थिले गुटे हेले कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट आउ जने थिले मास्टर क्राफ्टमैन इंडस्ट्री रे तो जो कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट से सब गुड्स प्रोडक्शन करथिले और मास्टर क्राफ्टमैन तार रेस्पॉन्सिबिलिटी थिला एक कैपिटलिस्ट को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करिवो ता सहित मैनेजमेंट टेक्निक बतेबो और जहाँ भी प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट करिवो ताकू से मार्केट रे सेल करिवो इटा होची मास्टर क्राफ्टमैन रो काम ओके सो मास्टर क्राफ्टमैन इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द कैपिटलिस्ट collect the products and sell in the market okay and he also provides loan to the capitalist loan provide करतला capitalist को craftsman what is per capita income is the income per head when national income is divided per capita income is equal to national income is divided by population okay when national income is distributed among the people equally the income per head is called per capita income तो national income को यदि population रे divide कर देबा जनक पिछा जेते पड़िबो that is per capita income okay then what is birth rate माने कोन जन्म हार हजारे जनसंख्या रे जन्म ग्रहण करुथिबा
लोकन को आमे बर्थ रेट कहता शिशु संख्या को. So birth rate is the number of birth per 1000 population, and birth rate is equal to number of births is divided by population into 1000. That is the birth rate. Same the death rate रही the number of deaths per 1000 population. So death rate is equal to number of death is divided by population into 1000. Next is infant mortality. How high infant mortality causes high birth rate. किभली भाବରେ उच्च मृत्यु हार अधिक जन्म हार रो कारण होइथाय. माने शिशु मृत्यु हार जदि अधिक हुए ताले जन्म हार कमी जीवा कथा, किंतु जन्म हार अधिक होइथाय. शिशु जदि अधिक मृत्यु वरण करिथांती माने वर्षे 2 वर्ष भितरे लोक मानकर चिंताधारा कौन रहिबो अधिक जन्म कर देथिबे एटलिस्ट गोटे दुईटा शिशु हमर बंचिबो बोली, तो जन्म हार वृद्धि होता है. ओके, तो लोक मानकर से थिंकिंग जो रोचे माने किछिटा छुआ को बंचेवाई अधिक से माने जन्म करेंगे, तो उच्च शिशु मृत्यु हार थिले ऑटोमेटिक कौन हम जन्म हार भी अधिक हम. व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफी माने होची हमर बेसिकली पॉपुलेशन, इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड होची गोटे देशर पॉपुलेशन को जदि हमें चैनलाइज कराला तांकर स्किल डेवलपमेंट विथ एजुकेशन दियाला, स्किल ट्रेनिंग दियाला और तांकर हेल्थ जदि ठीक अच्छी तो दैट विल एक्सेलरेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, दैट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम. So this is called the demographic dividend. So demographic dividend is nothing but the youth population with skill and healthy that will accelerate the economic growth of a country, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड माने होचे हम पॉपुलेशन को हम देशर विकास जेतेबेले व्यवहार करूछे सेतेबेले ताको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहुए. तो आम देश में जेहेतु यूथ पॉपुलेशन अधिक रही अराउंड 65% आमर यूथ, तो से आम देश में गोटे डेमोग्राफिक डिविडेंड रही. व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो. डिपेंडेंसी रेशियो माने कौन. डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ डिपेंडेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो डिपेंडेंट माने क्या कही था माने 15 वर्ष रु कम, ओके 15 वर्ष रु कम प्लस 60 रु अधिक 60 अबव, एटा को हमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन कही था. सो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बाय टोटल पॉपुलेशन जदि करबा जेते परसेंट मिलिबो दैट इज डिपेंडेंसी रेशियो. सो डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. इट कैन बी कैलकुलेटेड विथ the number of dependent population is divided by total population. Next is what is migration. Migration माने कौन. It is the change of residence from one place to another is called migration. जदि हमर बासस्थली को जदि हमें परिवर्तन करूची गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को, then we are migrating. तो से रूराल अर्बान माइग्रेशन आम देखी बेसिकली ग्रामांचल सहरांचल को लोक मैंने चली जाइछन्ति टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज से जगह अधिक सुविधा रही बोली. देन व्हाट इज रूराल अर्बान माइग्रेशन. इट इज द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बान एरिया इज कॉल्ड रूराल अर्बान माइग्रेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक जॉब, ओके, एजुकेशन, हेल्थ. द पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बान एरिया, that is rural urban migration. What is literacy rate. साक्षरता हार कौन. So literacy rate is the number of literates is divided by total population. टोटाल आम जनसंख्या रू जेते शतकड़ा लोक साक्षर अछंती. साक्षरतार अर्थ होची गोटे भाषा रे पढ़ी लिखी जानिथिबे ताले ताकू आमे साक्षर कहिताउ. तो जेते लोक साक्षर अछंती आम जनसंख्या रू दैट इज लिटरेसी रेट. तो आम देशर लिटरेसी रेट रही 74%. सो लिटरेसी रेट इज द रेशियो नंबर ऑफ लिटरेट्स
and the population. What is education policy? Education policy माने कौन? To develop the standard of education and for better upgradation of education, the policy which is undertaken by the government, that is education policy. शिक्षार विकास पाई, शिक्षार उन्नति पाई जो सब पदक्षेप माने निया जाए ताको आमे शिक्षा नीति कहि थाउ. तो शिक्षा नीति एबे जो रिसेंट 2020 शिक्षा नीति तार अनुकूल एटा इंडियन इकोनॉमी जो इंट्रोड्यूस होइछि फर्स्ट सेमिस्टर रे, that is due to new education policy. Then what is 5+3+3+4 structure? New education policy रे हमरो एटा हेछि 5+3+3+4 structure. 5 होछि हमर फाउंडेशनल कोर्स, थर्ड होछि जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकंड 3 होछि प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड होछि सेकेंडरी आ फोर्थ सेकंड होछि हमर इंटरमीडिएट, एटा हला सेकेंडरी एजुकेशन. तो एमती 4 वर्ष रही. तो 5 जो होइछि माने अंगनवाड़ी रो 3 वर्ष आउ प्रथम द्वितीय श्रेणी एटा मिसिकी टोटल 5 एटा हला फाउंडेशनल कोर्स हबो. तापरे हमरो जो रहला 3 4 5 3 4 5 हला हमर एटा जो प्राइमरी. तापरे अपर प्राइमरी हमर होछि 3 4 5 परे 6 7 8 ला अपर प्राइमरी. तापरे हला सेकेंडरी एजुकेशन माने 6 8 9 10 11 एटा हला फोर्थ. तो एई परि भाबरे 4 प्रकार स्ट्रक्चर. वर्तमान जो स्ट्रक्चर रही 10+2 एटा चेंज है कि ये स्ट्रक्चर को आसीबो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन कोर्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन और फॉर मास एजुकेशन. ओके माने अप टू एलिमेंटरी एजुकेशन हमें कहि पारिबा माने +2 पर्यंत ए ढांचा रहइबो. व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन एजुकेशन पॉलिसी? तो एजुकेशन पॉलिसी 1968 रो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रही जोटा होची FLO फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया जोटा निजर मातृभाषा. देन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश जोटा इंटरनेशनल लैंग्वेज. आ गोटे थर्ड लैंग्वेज आइदर हिंदी और संस्कृत एटा होची हमर नेशनल लैंग्वेज. तो गोटे हला हमर रीजनल लैंग्वेज, गोटे हला इंटरनेशनल लैंग्वेज आ गोटे होची नेशनल लैंग्वेज. सो the students will learn 3 language. Okay, 3 language, that is regional, international and national language. So that is 3 language formula in education policy. What is regional disparity? The difference of income or different types of opportunity between two region is called regional disparity. दुईटी स्थान मध्य रे समस्त प्रकार जो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, सब टाइप रो जो डिस्पैरिटी रोची पार्थक्य जो रोची दैट इज रीजनल डिस्पैरिटी. हु इज पुअर में कहा को कहता नॉर्मली ए पर्सन इफ ए पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स दैट इज फूड क्लॉथ एंड शेल्टर ही इज कंसीडर एज पुअर, ताको हमें पुअर कहता. किंतु एबे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अनुसार यार डेफिनेशन भी चेंज होइछि. जहाँ पाखे हेल्थर सुविधा नहीं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं, लैट्रिन मैंने सैनिटेशन सुविधा नहीं, ता सहित किसी एसेट नहीं ता पाखे आम ताकू पुअर कहीता. किंतु नॉर्मली आम खाद्य वस्त्र बासगृह जहाँ पाखे नहीं ताकू आम पुअर कहीता. व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी माने कौन? एब्सोल्यूट पॉवर्टी होची जोटा नॉर्मली आम पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करिथाउ गोटे मिनिमम एक्सपेंडिचर को लेकिन जो पॉवर्टी कैलकुलेट करा जाए दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो द पॉवर्टी व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग ए पॉवर्टी लाइन और मिनिमम एक्सपेंडिचर नीडेड फॉर सस्टेनेंस दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एंड व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी is generally it is considered to compare between the people.
बिटवीन देयर इनकम दुई जनकर भितर जदि आम रिलेटिव पॉवर्टी बाहर करुचे जार इनकम अधिक जार इनकम कम रहा से आम कहीपर रिलेटिव पुअर तो बेसिकली जिते भी प्लान पॉलिसी होची सब बेले आम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को लेकिन ही कैलकुलेट करिथाउ। देन व्हाट इज MGNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2005 टू प्रोवाइड 100 वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड 100 दिन निश्चित कर्म नियुक्ति प्रदान करिथाए गरीब श्रेणीर से ग्रामांचल परिवार मानकू MGNREGA थ्रू रे दिया जाए। व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना What is प्रधानमंत्री आवास योजना? So प्रधानमंत्री आवास योजना it is one type of योजना for poor through which a affordable housing is provided to the poor people. It was introduced in the year 2015. 2015 रे इंट्रोड्यूस होइछि आगु इंदिरा आवास थिला ता जगह प्रधानमंत्री आवास योजना आसिला जहाँ जो योजना द्वारा गरीब श्रेणीर लोक मानकु गोटे पक्का घर पाई टंका मिली थाए। देन व्हाट इज मुद्रा योजना? मुद्रा द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी। ओके तो यह अनुकूल्य रे कौन हुए लोक मानकु ऋण प्रदान करा जाए। ओके सो मुद्रा योजना इज वन टाइप ऑफ योजना थ्रू व्हिच लोन क्रेडिट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द पीपल। देन व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector? Primary sector होजे the sector which produces goods by using natural resources directly, that is primary sector। माने जोटा प्राकृतिक संपद को प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार करिथाए ताहाको आमे प्राथमिक क्षेत्र कहिथाउ। बेसिकली एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ओके दोज आर प्राइमरी सेक्टर। Then secondary sector, the sector which produces goods by taking goods from the primary sector। प्राइमरी सेक्टर रु जो द्रव्य ग्रहण करिकी जो क्षेत्र द्रव्य सेवा उत्पादन करिथाए ताको आमे सेकेंडरी सेक्टर बा माध्यमिक क्षेत्र कहिथाउ। जेते सब इंडस्ट्रीज माने कल कारखाना जहाँ अछि दोज आर कमिंग अंडर सेकेंडरी सेक्टर। देन व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर? द सेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेस, that is tertiary sector, that is maybe education, health, tourism, bank, insurance. Okay, so those are coming under tertiary sector. What is sectoral composition of national income? When national income is distributed among the different sectors according to its importance or contribution, that is sectoral composition of national income। को सेक्टर केते केते आसुची हम नेशनल इनकम को ताको जदि कैटेगोरिकली हमें जदि एक्सप्लेन करले that is the sectoral composition of national income। The next question is what is Gini coefficient? So Gini coefficient is one type of measure of inequality. Income inequality is measured through Gini coefficient। The Gini coefficient value 0 indicates perfect equality and 1 indicate perfect inequality। तो नंबर माध्यम रे जिते बेले हमें इनइक्वालिटी को मेजर करूचे इन टर्म्स ऑफ नंबर दैट इज गिनी कोफिशिएंट। द नेक्स्ट इज लॉरेंज कर्व। सो लॉरेंज कर्व इज वन टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू व्हिच इनइक्वालिटी मेजर थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम माध्यम रे जिते बेले हमें इनइक्वालिटी को मेजर करूचे दैट इज लॉरेंज कर्व। What is disguised unemployment? Disguised unemployment is basically seen in case of agriculture where the productivity of the people is zero। Okay, suppose गोटे जमी रे 3 जन काम कले 40 पैकेट धान होची किंतु यदि 5 जन जदि काम कले भी सही 40 पैकेट धान होची तो से जो 2 जन एक्स्ट्रा जो रहिले they can be called as the disguised unemployed। से समान को हमें disguised unemployed कहवा। Okay, so the person whose contribution is 0 to the production process is called disguised unemployed। The next is seasonal unemployment। Seasonal unemployment is
Basically, in case of agriculture, because agriculture depends on monsoon, so the people get employment during the rainy season, but they become unemployed other time. So this is called seasonal unemployment. The people are employed in some seasons and unemployed in other season. That is seasonal unemployment. The next is structural unemployment. What is structural unemployment? तो स्ट्रक्चरल माने होची जदि जितेबले स्ट्रक्चर जितेबले चेंज होची द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर माने आगुरी सब हैंडमेड जिनस माने थिला जितेबले मशीन मेड जिनस सब आसिला लोक माने जो हैंडमेड जगह जो काम करुथिले हस्ततंत्र से मानकर डिमांड कमी गला तांको द्रव्यर जिनस डिमांड कमी गला तो से से माने अनएम्प्लॉयड थे सो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सो द अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज क्रिएटेड because of change in the structure of production, that is structural unemployment. Then what is frictional unemployment? Frictional unemployment माने कौन जितेबले जड़े श्रमिक गोटे जगार काम करुला ताकू छाड़ीदेला तो पुणी आ गोटे से खोजब अलग जगह काम करने तो से मझी जो गैप रहा से टाइम रे जो अनएम्प्लॉयड होची दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. That is frictional unemployment. So a person became unemployed when he is searching for the job. जेतेबले जॉब पाई सर्च करूची after hiring from a after being hired from a production process. तो गोटे जगार जितेबले ताको छटई दिया जाउची सेठू जितेबले आउ गोटे जगार एंगेज होबा पई जितेबले खोजुची से टाइम रे से अनएम्प्लॉयड रहउची सो दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. Then what is educated unemployment? Basically शिक्षागत योग्यता थाई जदि जने व्यक्ति अनएम्प्लॉयड जदि रहिला then he is called educated unemployed. Okay, a person have educational qualification still he is unemployed, he is called educated unemployed. तो एटा बेसिकली कौन होची गवर्नमेंट जॉब पाई लोक माने पढ़ुछंती तो सही टाइम रे जो अनएम्प्लॉयड होचंती दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो आम देश में केरला सबुठारु अधिक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिली थाए. हु आर द मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमिशन? प्लानिंग कमिशन मेंबर्स किए? फास्ट हेल्ले आमर चेयरमैन जो होचंती आमर प्राइम मिनिस्टर्स, देन डेप्यूटी चेयरमैन जने थिले, ता सहित विभिन्न मिनिस्ट्रीज रु आसुतिले जेमती आमर फाइनेंस मिनिस्ट्री हला, होम मिनिस्ट्री हला, डिफेंस हला किंबा आमर रेलवे हला, हेल्थ हला एमती इंपोर्टाट मिनिस्ट्री रु जाउतिले. ता सहित गोटे स्पेशल पर्सनल डिफरेंट फील्ड रो इकोनॉमिक्स रो आही पारे किंबा सोशल जो आसी हे पारे एससी एसटी साइड रो जने रही पारिबे. तो एमती मेंबर सब रहितिले प्लानिंग कमिशन रे. राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन? इकोनॉमिक ग्रोथ हे पारे. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ हला, पॉवर्टी एलिवेशन, unemployment decrease unemployment, then maintaining economic stability and economic equality, अर्थनैतिक समानता स्थापन करबा पई, अर्थनैतिक स्थिरता आनिबा पई कोन कहता है बजेट माने योजना लक्ष्य रखिछि. व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग माने कोन? नीति means the national institution for transforming India. So this NITI Ayog is an organization which form different types of policies and recommend to the government for economic development of the country. That is NITI Ayog. तो नीति आयोग गोटे हूँ अनुष्ठान जहाँ विभिन्न प्रकार नीति प्रणयन करिथाए एवं सरकार को से रिकमेंड करिथाए. That is नीति आयोग. How does नीति आयोग encourage cooperative federalism? तो नीति आयोग रे हमर सबू चीफ मिनिस्टर्स सबू राज्यर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री माने ता सहित उपजिल्लापाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हमर केंद्र शासित अंचल लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं हमर राज्य मानकरू मुख्यमंत्री ए माने होछंती जो नीति आयोग गोटे गोटे मेंबर. तो आगु कौन थिला जितेबेले प्लानिंग कमिशन थिला सेते बेले एक चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मानकर हेते पावर नथिला टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द प्लानिंग कमिशन.
बट इन नीति आयोग रे सेमानंकु यथेष्ट सम्मान दियाला एवं सेमानंकु अंशग्रहण करने को अनुमति दियाहेला. सो इन दिस वे इट इज एनकरेजिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. संघीय व्यवस्था को यह प्रोत्साहन प्रदान करिथाय बा प्रोत्साहित करिथाय. कारण ए जगह रे गोटे राज्यर मुख्यमंत्री माने ता सहित केंद्र शासित अंचल उप राज्यपाल माने आसिकी सेठी से माने कौन कले अंशग्रहण करि पारले डिसीजन मेकिंग रे. So these are the short type questions. So here are some long question like characteristics of Indian economy in pre-British period, causes behind slow growth rate of private enterprise. तो एमती सब long question रही. तो यहाँ को हमें डिस्कशन करवा नहीं, यहाँ को डिस्क्रिप्शन लिंक रे दिया हबो. तो यहाँ को हमें प्रैक्टिस करवा. ओके, तो बहुत सारा क्वेश्चंस माने रही. So this is end of the class. So I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Thanks for watching this video.